Hello friends and welcome to Adda 247, the official YouTube channel of bankers and SSC Adda.com. You are watching the Hindu Editorial and Vocab show and I am Saurabh Day. So उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमने जो भी एडिटोरियल शोज किए हैं वो आपको काफ़ी पसंद आए हैं, जो कि आपके रिस्पॉन्स से दिख भी रहा है, आपके वॉचिंग नंबर से भी दिख रहा है. So thanks a lot for your for all of the love and appreciation that you have given. So now it's time for another editorial that we're going to have a discussion on, and this particular editorial was actually published on 21st of December of this year. So let's have a look at the first slide. See, this particular editorial is about leopards in a spot. All right, तो बार बार आप जानते ही हैं जो ये बेसिकली जो जंगली जानवर है ये बार बार इंसानी इलाकों में आ जाता है, रिहायशी इलाकों में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्लिक्ट होता है, ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट होता है, और उसकी रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे. नाउ अ लॉट ऑफ leopards and tigers and other wild animals actually have been straying into the residential areas of humans, and that's actually causing a lot of human and animal conflict, and this whole article is regarding the same. So the title of this article is Leopards in a Spot, and it was published on 21st December 2016. Now, let's have a look over here. In a landmark verdict on animal cruelty, the Supreme Court in 2014 prohibited Jallikattu, the bull taming sport, while saying that animals have honor and dignity too, their privacy must be respected and they need to be protected from unlawful attacks. So ultimately अगर आप लोगों को याद हो तो 2014 में जो है जो ये जल्लीकट्टू जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का टेमिंग स्पोर्ट फेस्टिवल होता है, ये ऑलराइट, ये तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बैन कर दिया था, ये बोलते हुए कि ये एनिमल क्रूएल्टी कर रहा है, और साथ ही में जो कि जंगली जानवर है, जो भी जानवर हो, उनका भी कुछ ऑनर होता है. दे ऑल्सो हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड डिग्निटी, ऑलराइट, तो उनका भी कुछ आत्मसम्मान होता है, और उनकी जो प्राइवेसी होती है, जानवरों की जो प्राइवेसी होती है, उसका भी सम्मान करना चाहिए. साथ ही में जानवरों पे भले जैसे ही चाहे भले इस किसी भी तरह का इलीगल जो अटैक होता है, जो भी अनलॉफुल अटैक है, जो भी अवैध किस्म का हमला है, इससे हमें उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए. So ultimately, in a landmark verdict or decision on animal cruelty, the Supreme Court in 2014 banned Jallikattu, which is a very extremely important festival, traditional festival of Tamil Nadu, in which various bulls are tamed, by the way, and this particular festival got banned in 2014 by the Supreme Court, while the Supreme Court also said that the animals have honor. And why it was banned? Because the Supreme Court said that the animals also have got honor and dignity, and their privacy must be respected no matter what. Plus, the animals need to be protected from unlawful attacks. So this was a version of Supreme Court 2014. Now, let's just move on over here. However, last month, some residents of a village near Gurugram clubbed a leopard to death. A few days back, the Delhi Forest Department trapped a young leopard from the fringes of Yamuna Biodiversity Park and will send it to Saharanpur. So ultimately, अगर हम बात करें तो पिछले महीने की बात करें तो गुरुग्राम के पास, गुरुग्राम बेसिकली जो गुड़गांव है वो अब गुरुग्राम बन चुका है, और गुरुग्राम के पास एक नज़दीक के गांव में एक तेंदुआ घुस आया था वहां पर उस गांव में, और उस तेंदुए को जो है लाठियों से मार के मार दिया गया, ऑलराइट, अल्टीमेटली. और साथ ही में कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक तेंदुआ पकड़ा था जो कि यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के जो है फ्रिंजेस में आ गया था, ऑलराइट, तो उसकी कह सकते हो आप आउटर रेंज में आ गया था, और उसके बाद उस पर्टिकुलर लेपर्ड को भेजा जाएगा सहारनपुर. सो अल्टीमेटली जस्ट व्हाट यू से rejecting all the whatever the Supreme Court had said regarding the honor and dignity of animals. Last month, some residents of a village near Gurugram, all right, that's Gurgaon by the way, now it's Gurugram. So some residents of a village near Gurugram, they clubbed, or you can say that, they actually beated a leopard to death, all right. And in fact, a few days back, the Delhi Forest Department trapped a young leopard from the fringes of Yamuna Biodiversity Park, and they're planning it to send it to Saharanpur. So this was the point over here. Now it's the time to have a look at the rearrangement that can arise over here. So let's have a look at the next slide, please. See, here's the next slide for you, my dear aspirants. Now, this is the rearrangement that you have to solve. Well, I'm going to wait 30 seconds for you, not 30 seconds, I'm going to wait 1 minute for you, in fact, to solve this rearrangement, and then I'll solve it for you as well. So your time starts now, 1 minute. "45 seconds for you, my dear aspirants. Hurry up."
Okay, 15 seconds more. Hurry up. No, not 15 seconds, 30 seconds actually. So very soon it will be 15 seconds though. And now 15 seconds more. I suppose you would have solved the rearrangement till now. The clock is ticking, 5 seconds. And the time is up. So now it's my turn to give you the final rearrangement over here. Now let's just have a look at all the sentences one by one. See, statement A says, quote, some residents of Mandawar village near Gurugram clubbed a leopard to death a few days back, the Delhi. So ultimately, see, at the beginning of the sentence, you can see quote is written over there. So might be this is particular with regards to something, whatever a particular quote has said. All right, so let's just go down to statement B. Forest Department trapped a young leopard on the fringes of Yamuna Biodiversity Park. All right. So there seems to be an action over here that where the Forest Department trapped a young leopard on the fringes of Yamuna Biodiversity Park. Now, why did it happen? For that, we'll have to see what is there in the next few sentences. Statement C over here is written, protected from unlawful attacks. Unfortunately, in November, ignoring the very same rights accorded by the basically. Now see over here, यहाँ पर लिखा हुआ है शुरुआत में protected from unlawful attacks. So regarding whom is it being talked about? Or like किसकी बात हो रही है वो देखने के लिए हम लोग को आगे जाना पड़ेगा sentences में. Okay, now statement D is written over here. The Supreme Court held that the animal has also honor and dignity which cannot be arbitrarily. So now see over here very firmly the Supreme Court has said something, and that's regarding the animals has honor, that's regarding that the animal has also honor and dignity which cannot be arbitrarily. So see over here statement D seems to be an independent sentence because यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली कुछ स्टेट कर रहा है शायद, और जिसके बल पर जो है हम आगे इस रीजमेंट को देखेंगे. So now let's have a look at the next sentences. Statement E is written over here, deprived of its rights and privacy have to be respected, and so definitely now this is regarding some information that was given previously. Statement F says in a landmark decision in 2014 prohibiting the bull taming sport Jallikattu. All right, so that was in statement F. Now आई थिंक मेरे ख्याल से देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, जो वॉट एवर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड रिगार्डिंग एनिमल हैज आल्सो गॉट ऑनर एंड डिग्निटी, इट वाज रिगार्डिंग सम पर्टिकुलर जजमेंट, एंड दैट्स व्हाई स्टेटमेंट एफ इज एक्चुअली द फर्स्ट सेंटेंस. इट इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस ओवर हियर. मेनी अ टाइम you will find some confusing statements, so that's why it's very important for you to ultimately go for the most independent one, and statement F is actually the most independent statement over here. That's why it's going to be the first one. So F is the first statement that says in a landmark decision in 2014 prohibiting the bull taming sport Jallikattu. Now who prohibited? Supreme Court prohibited. All right, that's why D is going to the next sentence that says the Supreme Court held that animal has also honor and dignity which cannot be arbitrarily what? Which cannot be arbitrarily deprived of, and its rights and privacy have to be respected, and so it's going to be FDE. Till now it's FDE. अब आगे क्या है वो देख लेते हैं हम लोग. Which cannot be arbitrarily deprived of, and its rights and privacy have to be respected and what? And protected from unlawful activities. All right. So देखा जाए तो E के बाद जो है C आ रहा है यहाँ पर. So the starting was from F, that was FDEC over here right now. Protected from unlawful activities. Unfortunately, in November, ignoring the very same rights accorded by the court. See, statement A भी देखिए. Court, some residents of Mandawar village near Gurugram clubbed a leopard to death, and a few days back, the Delhi Forest Department trapped a young leopard on the fringes of the Yamuna Biodiversity Park. So the last two are A, B. All right, now. So the complete rearrangement is right here for you, my dear aspirants. The first sentence is going to be F. All right, then it will be D. Then it's E. So at the starting is F, D, E, and then it's going to be A, B. Okay, once again, yes, the first one was F, and then it was D, and then it will be E and C. Okay, so it's actually F, D, E, C, A, B. Okay, so it's going to be F, D, E, C, A and B. So that's the correct rearrangement over here, and I hope that you are able to get it too. Now let's have a look at the next slide.
See, here's the next slide for you, by the way, and this is actually the first subheading of this particular article. इस आर्टिकल की पहली सबहेडिंग है ये. आप देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. देखो, फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ बातचीत करी जाइए. सो इट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस रिगार्डिंग ऑल सच वेरियस एक्टिविटीज वेयर वेयर एनिमल्स ट्रेन टू रेजिडेंशियल एरिया. आई थिंक मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में यहाँ बातचीत होने वाली है. अब देखते हैं यहाँ पर. देखो लिखा ये हुआ है. इन द फर्स्ट केस द लेपर्ड वॉज किल्ड बाय विलेजर्स बिकॉज इट्स स्ट्रेड इनटू द विलेज. In the second case, the leopard was chased like a criminal and then tranquilized for being sent to a national park. All right. So in the first case, the leopard was killed by villagers because it strayed into the village. All right. अब देखा जाए तो भाई पहले यहाँ पे 2 केस हमने देखे अभी अलग अलग जहाँ पर leopards ने stray किया था या वो मान लीजिए कि वो घुसपैठ कर गए थे. तो जो पहला केस है भाई देखो वहां पर हमने अभी देखा भी जो गांव वाले थे जहां पर वो लेपर्ड घुसा था, जहां तेंदुआ घुसा था, उन्होंने उस लेपर्ड को जो है उस तेंदुए को लाठी मार मार के मार दिया. सो इन द फर्स्ट केस द लेपर्ड वाज किल्ड बाय द विलेजर्स बिकॉज इट स्ट्रेड इनटू द विलेज. अब उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि देखो भाई वो गांव में घुस आया था, तो विलेजर्स का ये ओपिनियन था इससे सब लोगों को जान को बहुत खतरा है, जो मवेशी है उनको भी खतरा है, जो लोग उनको भी बहुत खतरा है. और साथ ही में देखो दूसरे केस में क्या हुआ था. इन द सेकंड केस जो लेपर्ड था भाई उसको बिल्कुल क्रिमिनल के जैसे कोई क्रिमिनल नहीं भागता है तो बिल्कुल उसको ऐसे भगाया गया था और उसके बाद ट्रैंकुलाइज किया गया था दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा. ऑलराइट. और उसके बाद अब प्लान किया जा रहा है कि उसको जो है नेशनल पार्क में भेज दिया जाएगा. ठीक है भाई. So in the first case, in the first one, the leopard was killed by villagers, all right. And why was it killed by the villagers? Because it strayed into the village, and according to the villagers, that particular leopard was a danger to all the cattle and the people staying in that particular village. And in the second case, the leopard was chased like a criminal, all right, like it's it did some sort of an offensive act by coming into the outskirts of that Yamuna Biodiversity Park. So anyway, in the second case, the leopard was chased like a criminal and then tranquilized for being sent to a national park. All right. So perhaps in the second case, there was some dignity that the leopard need not be killed. You can just tranquilize it and just send it to the national park. All right. Let's go to the next one over here. According to the Wildlife Protection Act of 1972, a wild animal can only be deprived of its life and personal liberty only after the due process is followed. However, in our nation, the due process is given a miss regarding humans, so forget about animals. We are exterminating an entire species just because of the perception that the earth is ours. Well, अब देखो जब हम यहाँ बात करते हैं, जब हम जंगली जीव जंतुओं की बात करते हैं, तो जो जंगली जीव जंतु होते हैं इनके अधिकारों को सम्मान देने के लिए, इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि 1972 में लाया गया था. इस एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी जंगली जानवर को अगर आप चाहते हैं कि उसको उसकी जान ले ली जाए या कह सकते हैं मतलब लेट्स से सम पर्टिकुलर एनिमल हैज एक्चुअली बिकम अ मैन ईटर. ऑलराइट. नाउ जब ऐसा साबित हो जाए उसके बाद ही आप उसको मार सकते हो. ऑलराइट. and a personal ability, for example, that over here I mean to say that जब आप किसी भी आप जानवर को तभी कैद कर सकते हो उसके जब कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ खतरा हो जाए, एंड यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस. जो ढंग का प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस है, जो कानूनी तरीका है, आपको उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा किसी भी जंगली जानवर को मारने के पहले या कैद करने के पहले. लेकिन हमारे देश में आप सभी जानते ही हैं जब हम ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं तो इंसानों को जो है, इनफैक्ट इवन जो ह्यूमंस हैं उनको भी कई बार जो पूरी कानूनी कार्रवाई का प्रॉपर तरीका है वो नहीं मिलता है. तो जानवरों को तो छोड़ दीजिए. वेल, ऐसा जो आर्टिकल में है वहां लिखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ था. सो वी आर एक्सटर्मिनेटिंग एन एंटायर स्पीसीज जस्ट बिकॉज ऑफ द परसेप्शन दैट द अर्थ इज आर्स. तो देखा जाए भाई, पहले आप जनरली क्या होता था, लोग जो है वो शहरों में रहते थे, छोटे शहर छोटे गांव. उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ गई तो शहरों के आसपास, गांव के आसपास जंगल थे तो वो जंगल काट दिए गए. ठीक है, वहां पर फिर वापस लोग आके बस गए. फिर लोग लगा कि और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर और जंगल काट दिए गए और लोगों का एरिया बढ़ता गया. तो यानी कि देखा जाए वो जानवर जो कि पहले उसी जंगल में रहता था, भाई उसको क्या पता कि लोग आ रहे हैं, उसको तो ये पता है कि देखो ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ रहता हूँ. ऑलराइट. और उसके बाद जब ह्यूमन जब वहां पर जहाँ पहुंच जाते हैं और इंसान जब अपनी बस्तियां बना लेते हैं तो उसको तो ये लगता है यार अब कल परसों तो यहाँ तो पेड़ थे, पता नहीं ये इंसान कहाँ से आ गए या ये घर कहाँ से बन गए. खैर, मुझे अपना शिकार करना है तो इट जस्ट गोज फॉर इट्स ओन नेचुरल थिंग्स.
और वहां पर क्योंकि ये मान लिया जाता है कि देखो ये जानवर घुस आया है हमारे गांव में तो इसको मार दो क्योंकि घुसपैठ इसने करी है, जबकि देखा जाए तो ह्यूमंस आर द वन हु आर एक्चुअली इंटरफेयरिंग। ऑलराइट, वेल दैट विल बी अनदर टॉपिक टोटली। सो अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, अ वाइल्ड एनिमल कैन ओनली बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स लाइफ। दैट मीन्स अ वाइल्ड एनिमल कैन ओनली बी किल्ड or it can only be captured after the due process, the proper process, the legal process is followed. However, in our nation, the due process or the legal process is actually given a miss, yani it's not, it's not followed properly regarding humans. So let's just not talk anything about animals, and we are actually exterminating an entire species. Over here is regarding leopards, but definitely we are actually exterminating many species just because of the perception that the earth is ours and the proper area, and we the humans are the only inhabitants of the earth, and no other animal actually has got the right to live over here unless we want to. Now this is what was written over here that can be made up of from this particular article. So I hope that you were able to grab the points over here. Now let's move to the next one. And over here, the next one brings you some question, by the way. So, which of the following is true according to the passage? All right. So, whatever you saw, अभी जो भी आपने देखा, उसके हिसाब से उसको माइंड में रखिए और बताइए इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा सत्य है उन पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रखते हुए। स्टेटमेंट ए says, in the first case, the leopard was tranquilized and sent to a national park. B says the Wildlife Protection Act 1972 protects the life and liberty of wild animal. C says India has a bad record when it comes to following a due process. And once again, you will have 30 seconds and your time starts now. Okay, 15 seconds more. Answer quickly. Time is up. So now, I hope that you would have given your answers, by the way, in the comment section. Now it's my turn to give you the correct answer over here. Excuse me. Now see, statement A says, in the first case, the leopard was tranquilized and sent to a national park. No, that was in the second case. In the first case, the leopard was killed by the villagers. Statement B says, the Wildlife Protection Act 1972, actually, okay, that protects the life and liberty of wild animals. Yes, to some extent, it does so. Statement C says, India has a bad record when it comes to following a due process. Yes, we saw that in the previous slides. So definitely option number 5 that says only B and C is the correct one over here. और अगर आपने कहा था कि इस particular question का जो आंसर है वो विकल्प 5 है जहां पर only B and C लिखा है, तो आपने बिल्कुल सही कहा था, because yes, that's the correct answer. So now let's have a look at the next slide, and I hope that you were able to answer this question correctly. So here's the next question slide, by the way, and see. जो अगला यहाँ सब हेडिंग है देखो भाई, वो है नेचुरल होम्स। ऑलराइट, अब नेचुरल होम्स के रिगार्डिंग हमने क्या लिखा है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। See, in the first place over here it's written, in the second case where the leopard was tranquilized and sent to a national park, it was assumed that the leopard would have come from one of the two national parks situated near the location of its capture. जो दूसरा केस था जहां पर जो तेंदुआ था उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको जो है बेहोश करके नेशनल पार्क की तरफ भेज दिया गया था। ऑलराइट, वहां पर ये मान लिया गया था कि ये जो लेपर्ड है, ये जो तेंदुआ है, ये जहां से वो पकड़ा गया था ना, जिस स्पॉट से वो पकड़ा गया था, उस स्पॉट के नजदीक में 2 और नेशनल पार्क्स थे, तो वहीं कहीं से एक न एक आ गया होगा। तो इसका जो नेचुरल है वो नेशनल पार्क ही है, ऐसा अज्यूम कर लिया गया हमारे अथॉरिटीज द्वारा। अभी हम लोग देखेंगे इस चीज के बारे में आगे ने। Okay, so in the second case where the leopard was tranquilized after getting caught and it was sent to a national park, it was assumed by the authorities that the leopard would have come from one of the 2 national parks situated near the location of its capture, or near the location where that particular leopard got captured, and that's actually the outskirts of the Yamuna Biodiversity Park. So our authorities, that's our forest authorities and other people, our authorities have assumed that the natural home of a wild animal is either a national park or a wildlife sanctuary. They have no rights to roam in forests or stray into residential areas inhabited by humans. Unfortunately, the animals don't know it yet. तो देखिए, मैंने अभी यहाँ पर जो भी पॉइंट बोला आपसे, मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका था। हमारे देखो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे फॉरेस्ट के अथॉरिटीज़ हैं या दूसरे वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ हैं,
उन्होंने ये मान लिया है कि किसी भी जंगली जानवर का जो नेचुरल घर है, ऑलराइट, जो प्राकृतिक घर है, वो कोई नेशनल पार्क होगा या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही होगा, अदरवाइज वो कोई नेशनल घर हम नहीं मान सकते हैं। और क्योंकि जो एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर है, इनका नेचुरल घर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इनको कोई अधिकार नहीं है जंगल में घूमने का, ऑलराइट, क्योंकि वहाँ तो हम लोग शायद मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, ओके। और साथ ही में इन जंगली जानवरों को उनका कोई अधिकार नहीं है किसी भी रिहायशी इलाके में घुसने का, क्योंकि रिहायशी इलाके टोटली इंसानों के लिए है। और लेकिन प्रॉब्लम ये चीज़ है कि जानवरों को ये चीज़ पता नहीं है। जैसे मैं आपको बताइए भाई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से इंसानों के शहर बड़े होते गए और आसपास के जंगल छोटे होते गए, लेकिन जो जानवर उन जंगलों में रहते थे उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। वो कभी कभी तो डेफिनेटली उन्होंने कोशिश करी कि आप बिल्कुल कि वो भी कोप विद कर जाए, उन्होंने शिफ्ट किया जंगल्स को अपने, उन्होंने अपने घर बार बार शिफ्ट किए, लेकिन अगर कभी भी भूले भटके वो अपने पुराने इलाके में आ जाते थे तो उसके बाद उनका क्या हाल हो रहा है, उसी की रिगार्डिंग हम इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं। सो आवर अथॉरिटीज हैव टोटली assumed, now it's their perception that the natural home of a wild animal is either a national park or a wildlife sanctuary. All right, now why so? That's because our authorities think that the wild animals that have no rights whatsoever to roam in forest or stray into residential areas, because residential areas belongs to humans only. But the problem is that the animals don't know it yet. So देखिए, the thing is, now the thing over here is that, you know, our cities, in our cities, because of population explosion, the size of our cities kept on increasing, and the surrounding areas, which were actually taken, what do you say, originally the surrounding areas of a city used to be the part of forest, various forests, but since the city kept on increasing, the forests were, they were all, the trees were removed, all right, and the trees were felled over there, and cities kept on increasing, expanding, but the forests kept on reducing. So the animals who actually used to live on those forests, they also migrated, but some point of time, when they tried to come back to their previous home, they were labeled as an outsider, and they were killed right away or tranquilized to be taken to a new national home that's going to be a national park or a sanctuary. Now, let's go to the next one over here. And see, here's the next part of this particular same subheading that's called natural homes. The thinking of the authorities also expands to the tribals living in forest and other forest dwellers who don't deserve to live in forest because they are human and they live in cities and urban dwellings only. तो देखा जाए तो सिर्फ जानवरों तक की ही नेचुरल होम वाली थिंकिंग नहीं है हमारे अधिकारियों की। ये जो नेचुरल होम वाली जो थिंकिंग है, जो प्राकृतिक घर वाली थिंकिंग है, ये उन लोगों पर भी अप्लाई होती है, हमारे वो बेसिकली ट्राइबल्स लोग, जो ट्राइबल किस्म के जो लोग होते हैं, जो कि रहते हैं, ट्रेडिशनली रहते आए हैं वो फॉरेस्ट में और जंगलों में, वो बहुत स्टार्टिंग से रहते आए हैं और शायद अब भी वो कई सारे लोग वहाँ जंगलों में रहते हैं। लेकिन ये जो ट्राइबल्स हैं, अथॉरिटीज़ के हिसाब से ये अनसिविलाइज्ड है और ये गलत जगह रह रहे हैं। इनको ना तो जंगल में रहना चाहिए, ना कहीं मतलब ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहाँ पर जानवर रहें, इनको इंसानी इलाकों में ही रहना चाहिए, फिर भले ही वो ट्राइबल्स वहाँ पर सदियों से क्यों ना रहते आए हो। So ultimately, the thinking of the authorities also expands to the tribals. It's not only limited to the animals, it also expands to the tribals living in forests, because our authorities think that forests and that's not the place where the tribals should live, because they are humans and humans live in cities and urban dwellings only. So these tribals should try to cope with the situation and they should also move to cities and urban dwellings. All right. Now let's go to the last part over here. The Wildlife Protection Act 1972 clearly states that wild animals are not the property of the government and they can't be killed or captured unnecessarily unless it has caused harm or is diseased or is paralyzed. However, fear plays an important role in the minds of our authorities and common people. तो देखा जाए तो जंगली जानवरों को जो प्रोटेक्शन करने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए जो ये एक एक्ट बना हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में आया था, इसमें साफ साफ ये मेंशन्ड है, साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी भी जंगली जानवर को आप सरकारी संपत्ति नहीं मान सकते और इसी वजह से आप किसी भी जंगली जानवर को मार नहीं सकते या फिर उसको कैद नहीं कर सकते जब तक कि ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, उस जंगली जानवर ने कोई नुकसान ना किया हो या फिर उस जंगली जानवर को कोई डिजीज या बीमारी ना हो गई हो, और तीसरी चीज, या वो जंगली जानवर बिल्कुल पैरालाइज हो और वो ठीक से हिल नहीं पा रहा हो और उसको काफी नुकसान हो रहा हो। सिर्फ इन 3 केसेस में ही आप उसको मार सकते हैं या फिर उसको कैद कर से कहीं और उसको मेडिकल केयर दे सकते हैं। लेकिन देखा किया जाए कि देखो, जब भी ऐसा कोई जंगली जानवर, जब भी कोई कहीं वो घुसपैठ करता है रिहायशी इलाकों में, जैसी कोई घटना सामने आती है
तो अफवाह देखो और डर जो है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? वहां पर जो लोग रहते हैं उनके माइंड में, और जो अधिकारी है उनके माइंड में। भाई ऑब्वियस है, कोई भी अगर देखो इंसानी, अगर मैं बात करूं कॉमन पॉइंट से, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके घर में उसको सुबह सुबह टाइगर या लेपर्ड मिल जाए। ऑलराइट, दैट्स द डेफिनेट थिंग, बट देन अगेन विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस, ट्राइंग टू बी ब्रेव एंड गेटिंग रिड ऑफ द एनिमल कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। ऑलराइट, so that's the thing over here. So the Wildlife Protection Act 1972 clearly states that wild animals are not the property of the government, and the wild animals cannot be killed or captured unnecessarily unless that wild animal has caused harm to any particular human or is diseased. All right, it has got some kind of diseases or is totally paralyzed because of any particular thing. So only these cases you can actually kill or capture the wild animal. However, fear plays an important role in the minds of authorities and also common people, because nobody wants a tiger or a leopard to walk up to him and tell him, what do you have for breakfast? All right, so that's the thing. Now, I hope that you were able to grab the points over here, and now it's the time for another question. So let's have a look at it. See, here's the question for you, my dear aspirants. Which of the following is not true according to the passage? All right, and here are your three statements, by the way. Statement A says tribals and forest dwellers live in urban dwellings. Statement B says the Wildlife Protection Act 1972 allows the killing of wild animals freely. Statement C says our authorities always take action on time when it comes to the straying of wild animals. And you got approximately 30 seconds to give me an answer, and your time starts now. Okay, I hope that you guys are answering. Just 15 seconds more. Five seconds more. And your time is up. So I hope that you guys would have given your answers by now. Statement A says tribals and forest dwellers live in urban dwellings. Well, that's a wrong sentence. It is not true. Statement B says the Wildlife Protection Act allows the killing of wild animals freely. No, it doesn't. Statement C says our authorities always take action on time when it comes to the straying of wild animals. Now, had that been the case, the leopard wouldn't have been killed in the first case by the villagers. So that's why I'd say when it comes to being not true over here, all these three statements are actually not true, and that's why option number 5 that says all A, B and C, that's the correct answer over here. तो जिन्होंने भी कहा है कि विकल्प नंबर 5 सही जवाब है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, शाबाश। तो चलिए यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का एडिटोरियल। अब हम बारी है आज के द हिंदू वोकैब क्विज की, जहां पर हम अपनी वोकैबलरी को इंप्रूव करेंगे। आई होप दैट यू एंजॉयड द एडिटोरियल टुडे, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पॉलिशिंग योर वोकैबलरी विद द हेल्प ऑफ द हिंदू वोकैब क्विज। सो हियर वी गो। See, here's the first image for you, by the way, where you can see an animal. Actually, it's an elephant cub that's being trained and being tamed, by the way, and that's regarding the same. We have given the sentence over here. These people are taming the elephant cub for following orders. All right. तो basically ये जो यहाँ पर लोग आपको दिख रहे हैं, ये उसको कह सकते हैं आप टेम कर रहे हैं, उसको घरेलू बना रहे हैं, ताकि ये जो जंगली जानवर है, ताकि ये जो हाथी का बच्चा है, ये कह सकते हैं आप निर्देशों का पालन करना सीख जाए। सो दीज गाइज आर एक्चुअली टेमिंग द एलिफेंट, दे आर ट्राइंग टू डोमेस्टिकेट इट फॉर फॉलोइंग ऑर्डर्स। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन प्लीज। So here's a question for you. Which of the following are the most similar in meaning to the word taming? And here are the options. They are domesticating, enslaving, liberating or emancipating. 30 seconds for giving your answer, and your time starts now. Fifteen seconds more. Last 5. And the time is up. So I hope that you would have given your answers by now. Now see,
When the word is taming, देखो जब taming की हम बात करते हैं और synonym अगर हम देखें या पर्यायवाची देखें भाई, तो वो तो होने वाले हैं domesticating या फिर enslaving, alright। और जब हम बात करेंगे इनके विलोमों की देखो तो वो हो जाएगा liberating या फिर emancipating, talking about the synonyms or most similar in meaning the word taming, that's going to be domesticating or enslaving, and that's why option number 2 that says B and A, that's the correct answer. The antonyms of the word taming are gonna be liberating or emancipating. I hope that you gave the correct answer. Option number 2 जो है वो सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ कि आपने यही जवाब दिया होगा। Now let's have a look at the next image. See, here's the next image for you, by the way. The tiger, you can see, यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ अधिकारी लोग हैं, वो उन्होंने एक टाइगर को जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं आप जाल में फंसा रखा है और शायद उसने बेहोश भी किया हुआ है। Well, whatever that's going on over here. The tiger was caught after it strayed into a residential area. तो एक रेसिडेंशियल एक रिहायशी एरिया में घुसने के बाद इस जानवर को जो है इसको शायद न्यूट्रलाइज किया गया है या इसको कह सकते हैं आप ट्रैंक्विलाइज किया गया है और बेहोश करके शायद इसको शिफ्ट किया जाएगा। So well, that's the thing over here. The tiger was caught after it strayed. It went into, it roamed, well, we can say, it just went into a residential area, and now they are trying to, whatever they're doing, trying to do something over here. So well, anyway, the word is stray, and now here's the question for you. So the question is regarding which of the following are most opposite in meaning to the word stray. I hope that you got the hint over there, and now it's your turn to give me the antonym for the word stray. Now the options over here are wander, meander, stay, remain. Antonyms of stray, 30 seconds, time starts now. Okay, 15 seconds more, answer quickly. Last 5. So the time is up, by the way. Now it's my turn to give you the correct answer. अब देखो भाई, stray का meaning होता है घुसपैठ करना, all right? It actually means you can say to just go uninvited. That can be a set of one of the meanings of stray. Now the synonyms of stray are gonna be wander or meander over here. They can be said as a synonym. एक तरह से देखें तो पर्यायवाची बन सकते हैं wander या फिर meander stray के। और जो एंटोनिम या विलोम होंगे यहाँ पर स्ट्रे के, they are going to be stay and remain. So that means option number 3 that says C and D is the correct answer over here. और आप में से उन सभी लोगों ने जिन्होंने कहा कि विकल्प नंबर 3 C and D सही जवाब है, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब चलते हैं अगले शब्द पे। So here's the next word for you, and you can see Sachin Tendulkar over here, by the way, and regarding him we have said that his resilience was the key to his long career. All right. उनका किसी भी कह सकते हैं आप किसी भी हालात में ना झुकना, बल्कि अपने आप को रीमॉडिफाई करके जो है अपने आप को वापस रिकॉइल करके हर मुसीबत का सामना करना, ये उनकी एबिलिटी थी जिसकी वजह से उनका जो करियर था वो 20 साल के ऊपर चला गया। सो नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन, एंड हियर इट इज द क्वेश्चन प्लीज। वेल, here's the question for you. Which of the following are most opposite in meaning to the word resilience? And well, यहाँ देखिए आपको antonyms पूछे जा रहे हैं resilience के, और ये रहे आपके options. They are flexibility, pliability, rigidity, or fragility. And you got 30 seconds. Your time starts now. Okay, 15 seconds more. Last 5. The time is up. So now it's my turn to give you the correct answer over here. Well, see, my dear aspirants, when it comes to resilience, and actually see the synonyms can be your flexibility or pliability. All right. तो जब हम देखिए बात करते हैं यहाँ पर पर्यायवाची की resilience के लिए, तो देखो ये हो सकते हैं flexibility या फिर pliability. जब हम बात करेंगे यहाँ पर antonyms या विलोम की, देखो भाई, तो ये होने वाले हैं rigidity या fragility. The antonyms of the word resilience are gonna be rigidity or fragility, and that's why option number you can say 4 that says D and C, that's the correct answer over here. और जिन्होंने भी कहा है कि विकल्प नंबर 4 सही जवाब है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है, शाबाश। अब बारी है आखिरी 2 वर्ड्स को डिस्कस करने की, so let's just go on. Here's the next image for you. You can see
two skippers over here, one former skipper and one current skipper. Audacity is the defining factor in the captaincy of these skippers. That means you can say that ये देखो इनकी जो कैप्टनसी है उसमें fearless जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर भले ही सामने बड़ी टीम क्यों ना हो या फिर इनफैक्ट क्रिकेट ऑफिशियल्स ही क्यों ना हो, ये अपने अधिकार को लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं. So that's the thing, and audacy or bravery is the defining factor in the captaincy of these skippers. Now let's have a look at the question. See, here's the question for you. Which of the following are most similar in meaning the word audacity? So, ultimately, you got some options over here. बताइए इनमें से कौन सा है synonym या पर्यायवाची audacity का? Options है boldness, dauntlessness, cowardice or timidity. And your time starts now. $15 seconds more. Okay, hurry up. Last 5. Time's up. So now it's my turn to give you the correct answer. देखो भाई ऑडेसिटी जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो कि ब्रेवरी या बहादुरी के सेंस में हम बोल सकते हैं. Now the synonyms for the word audacity are gonna be boldness or dauntlessness. Yes. और जो antonyms हो जाएंगे वो हो जाएंगे cowardice या timidity. So the synonyms are gonna be boldness or dauntlessness and the antonyms are gonna be cowardice or timidity. So yes, option number 1 that says A and B is the correct answer. आप में से जिन्होंने भी कहा कि ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, they have done a good job, well done. So now it's time for the last word of the day, and here let's have a look at the image. Well, here's the image for you. You can see some malnourished kids over here. These deprived children suffer all their life. All right, so perhaps बहुत दुख की बात है कि ये जो बेसिकली यहाँ पर जो बच्चे हैं, all right, ऐसे बच्चे जो है जो कि काफ़ी malnourished लग रहे हैं, ये काफ़ी दुखी रहेंगे और इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है पूरी ज़िंदगी में. तो इससे पहले कि आप अगली बार अपनी थाली में खाना वेस्ट करने का सोचें, एक बार इस इमेज के बारे में ज़रूर सोचिएगा. सो नाउ द वर्ड इज डिप्राइव्ड. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन प्लीज. Well, here's a question for you. Which of the following are most opposite in meaning the word deprived? All right. So deprived का यहाँ पर antonym क्या होगा इन options में से है? आपके पास options है underprivileged, disadvantaged, privileged or prosperous. And your time starts now. 30 seconds. $15 seconds more. Last 5. Okay, the time is up. So I hope that you were able to give the answer over here. Well, when we talk about deprived, all right, see that उसका जो मतलब होता है वो यही होता है underprivileged के सेंस में हम बात करते हैं. deprived की बात करें, the synonyms would have been underprivileged or disadvantaged. तो जो प्रायवाची होते हैं वो होता है underprivileged या फिर disadvantaged. और जब हम बात करते हैं antonym या विलोम शब्द की तो वो हो जाता है privileged या फिर prosperous. तो समृद्ध जो है ये इसका antonym कह सकते हैं आप. And that's the thing over here. C and D is the correct answer. And that's why option number 3 that says C and D, that's the करेक्ट आंसर. और जिन्होंने भी कहा कि ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया है. सो आई होप दैट यू एंजॉयड टुडेज द हिंदू एडिटोरियल एंड वोकैब शो. एंड विद नाउ आई लाइक टू टेक your permission to leave by the way, and I hope that you enjoyed, because ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे. क्योंकि देखो भाई आपका कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और वोकैबुलरी तो हम इंप्रूव करा के ही छोड़ेंगे, बिकॉज at Adda 247 we are all concerned with your success. Thank you.